Welcome to our channel Be Always Learner. Today we are talking about the solution of difference equation. Difference equation is representing the system or discrete system. So we are going to understand the difference equation and their solution. So if you like the video, please like it and share it and subscribe the channel also. So let us have this difference equation, and this equation is having xn and yn as output. Let the input sequence xn is 0 for n is less than 0. It means we are talking about causal systems. And the initial condition of yn, or initial condition of yn for n is equal to -1 exist. N is equal to -1, that is going to exist. Now let us compute the successive values of yn, where n is greater than and equal to 0. Now for that we have to calculate the value of y at n is equal to 0. So value of y at 0. Now I am putting the value here. So this will be a y minus 1 and plus x 0. Clear? So another value at n is equal to 1, we have to calculate y at 1 is equal to a, then y 0 plus x1. Now here we can have the value of y0 from the above equation, that will be a bracket start a y minus 1 plus x0 bracket close plus x1. Now we can rewrite is like a square y minus 1 plus a x0 plus x1. So that is y1. In the same way we can calculate for n is equal to 2, it is y2, that is equal to a. Now from this we can calculate the values, and we have to put the n is equal to 2 in this equation. So after putting the value, we are having y 2 minus 1 is 1 plus x2, and that is equal to a y1. From that we can get the value of y1. So y1 is a square y minus 1 plus a x0 and plus x1 bracket close plus x2. If we solve it, we will have value of y2, that is a cube y minus 1 plus a square x0 plus a x1 plus x2. So that is what I am getting. So ये हमें मिल गया है. अब उसके बाद हम इसको फॉर एनी वैल्यू ऑफ n अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास n की कोई भी वैल्यू हो तो उसके लिए हम कैसे y n कैलकुलेट करेंगे, राइट. सो फॉर दैट यहाँ पे हमें 2 लिया तो यहाँ पे पावर n प्लस 1 हो गई. सो वील राइट n प्लस 1. सो y minus 1 as it is plus a raised to the power, now power is 2 here, so here it is 2, so it is n x0 n plus a n minus 1, पावर डिक्रीज होती जाएगी, x1 प्लस सो ऑन xn. सो इस टाइप से हम इसको n के लिए लिख सकते हैं. अब हम इसको समेशन के रूप में लिखें क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू है x को रिप्रेजेंट कर रही है और ये y के कोएफिशिएंट्स और y को रिप्रेजेंट कर रही है. तो हम इसको रीराइट करें a n प्लस 1 y minus 1. So this is kind of representation
plus, now summation, we can take here another variable k is equal to 0 to small n. Now a raised to the power k and x n minus k. So in that sense I can represent the system. Now अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके दो पार्ट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट. सो अब फर्स्ट पार्ट क्या है? द फर्स्ट पार्ट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंडीशन y minus 1 and the second part is depending upon the input x. Now when y minus 1 is 0 means this initial condition is 0, this y minus 1 is 0, then this y, this system is only depending upon the second part, only this part, only on this part system is going to depend. Now for that अगर सिस्टम इस पे डिपेंड करता है उस केस में तो, और इसका रिवर्स अगर हम केस अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर x यहां पर 0 है तो सिस्टम इस पे डिपेंड करेगा, वाइस वर्सा. यू कैन अंडरस्टैंड इट. सो फिर से हम प्रीवियस केस पे आते हैं कि अगर y माइनस 1 अगर 0 है, when y minus 1 is equal to 0, output depends upon only on input side, right? Hence we can say yn is known as, this yn is known as zero state response, ZSR. We can write it zero state response. किस केस में? जब हमारे पास y minus 1 0 है. इट मीन्स क्या हुआ कि इनिशियल कंडीशन 0 है. वी कैन राइट इट सेपरेटली ऑल्सो कि व्हेन इनिशियल कंडीशन जब 0 होगी तो हम क्या कहेंगे? ZSR कहेंगे. किसको कहेंगे? yn को. और इसका रिवर्स केस अगर हम लेते हैं और इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे अभी हम, कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि YF, बिकॉज दैट इनपुट इज देयर, सो दिस इज ए फोर्स. सो YF मीन्स फोर्स रिस्पॉन्स is equal to, we call it forced response. YF is equal to summation n, sorry, k is equal to 0 to small n ak and x n minus k. and हम स्टार्टिंग से लेके चले थे कि n is greater than n equal to 0. So it means this is forced response of a system when initial conditions are 0. Now in another case, when there the second part is 0, means input is 0. Now input xn is 0. If input is 0 means this second part is 0. If second part is 0, then we can write yn, that is a natural response, that is natural response, a response due to initial conditions yn, that an plus 1, इसमें केवल first part exist करेगा equation का, right? So again the same condition is there. So it means अगर इनपुट हमारे पास 0 होता है तो नेचुरल रिस्पॉन्स yn से डिनोट करते हैं हम, दैट इज इक्वल टू an प्लस 1 y माइनस 1. तो इस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलेंगे? दैट रिस्पॉन्स इज 0 इनपुट रिस्पॉन्स. इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से ZIR, right? So it depends upon the nature of system and the initial conditions.
The zero state response or the forced response depends on the nature of the input signal. Now, for any arbitrary discrete time systems, we can write an nth order differential equation by summation k is equal to 0 to capital N a k y n minus k is equal to summation k is equal to 0 to m b k and x n minus k. This is for nth order differential equation. And as far as the solution is concerned, we can represent the solution of difference equation by yn, that is YH, that is homogeneous response, plus YP. And YP is a particular solution and H stands for homogeneous solution. Homogeneous solution is going to be there जहां पे हमारे इनपुट जीरो होंगे और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस वहां जहां पर हमें इनिशियल कंडीशंस हम जीरो करके चलेंगे. सो दिस इज अबाउट द सॉल्यूशन of the difference equation, right? So hope you like the video and please subscribe the channel.